would like to request Dr.Jaipal Singh, sir, Associate Director and Head CDAC Guwahati. I welcome you, sir. Assalamualaikum. I am from a slightly different background. Most of you are from agriculture, maybe as a scientist or engineer or whatever. I am basically an electronics engineer, working in electronics and IT for over 30 years now, and into agricultural electronics and IT for around 15 years. So we have done some work based on which I'm thankful they have invited, and we are here to share our knowledge. Yes, silence, please. Most of the things that I thought I would be discussing probably have been discussed so far in the lectures. Yesterday I had taken the timetable and schedule, and most of the topics which I thought I would be discussing must have been discussed with you already. So what I'll try to do is, I'll try to, just as one of you indicated that business model and business aspect is very critical, so I'll try to, I did a few slides right now, so I'll try to focus on those also, and maybe you can discuss those things because I could not write those things in such a short time. And so, first, I think it's very important that I give you what I stand for or what background I have and how I can help you as an entrepreneur to grow into business. Okay. So for that, let me tell you where do I come from. I come from an organization called CDAC, which is a Center for Development of Advanced Computing. Next slide. Yeah. And the CDAC was established by the Ministry of Electronics and IT way back in around 1990, 89 actually, to develop India's own supercomputers, which were derived from US to India. So it was established for developing own computers, जो हमें देते नहीं थे वो लोग. So we did that, and 1991 was the first supercomputer launched by India. Next slide. Next slide. So 91 was the first supercomputer, and thereafter supercomputers have been continuing, and world is running very fast. We are also trying to catch them. Every year there is a competition about supercomputers, and this year we had 75th rank, which is a reasonably good rank in the list of supercomputers available in the world. Countries like US and will have एक ही type का supercomputer, उनके पास 50 versions वो they'll create. US and China kind of people. So, but we have one supercomputer at CDAC Pune, which is ranked 75th, which is a very good ranking. So that competition continues, and therefore I come from an organization which is actually into computers. And computers are today reigning the world. They are the buzzword. ठीक है, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, जो मर्जी एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर्स उसके अंदर है. कंप्यूटर्स का यूज है. चाहे आपका स्टैंडर्ड कंप्यूटर जो आपने डेस्कटॉप टाइप का है वो है, सुपर कंप्यूटर है, या एक और टाइप का कंप्यूटर्स हैं जो हम कहते हैं बिल्कुल मिनिएचर है, जो आजकल माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर टाइप के कंट्रोलर हैं जो आजकल आपकी इस साइज के हैं और जेब में डलते हैं. मोबाइल फोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर. हम उसको मोबाइल कहते हैं, लेकिन उसके अंदर वही सारा कंप्यूटर काम कर रहा है जो डेस्कटॉप का काम हो रहा है, वो सारा काम उसमें भी हो रहा है. So it's a very good computer. So like that, computers have different scales. एक सुपर कंप्यूटर है जो कि लगभग पूरे साइज का है, जो पूना में है वो पूरे रूम के साइज का सुपर कंप्यूटर है. So like that, there are sizes, and so that's what we do. Next slide. अब इसके साथ साथ हम और भी काम करते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटिंग is one. And quantum computing is new area which is coming up, which is 1,000 times more powerful than these computers. So वो उस पे हम काम कर रहे हैं. Electronics के सारे काम हैं. Health, agriculture और जितने भी applications हैं, वो सब पे हम काम कर रहे हैं. Right? So some of them are listed, and just to give you an idea, National Telemedicine System India का जो बनाया हुआ है, जो Government of India ने launch किया हुआ है, world का नंबर 1 सिस्टम बन चुका है, वो हमने किया है, वो सीधे कोहली का है.
क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, जितने भी नेशनल कंप्यूटिंग के मिशन चल रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह सीडैक मोबाइल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई सिक्योरिटी, ये वो सारी सीडैक की होती हैं। तो and I come from a place called Mohali, which is near Chandigarh, and we focus on electronics and IT, cyber security. तो ये तीन फोकस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं हेड कर रहा हूँ, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या काम किया वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, because telling you more about what vertical farming is, probably the Hasan sir and others have already told you so many things that मेरी knowledge एग्रीकल्चर डोमेन में शायद उनसे कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने क्या काम किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। We have developed a range of products which are actually started somewhere around 2008-10 के आसपास हमने स्टार्ट किया था। तो कुछ है उस समय वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, जिनको हम आजकल IoT कहते हैं, और उससे भी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आ गई है IoT से भी ऊपर टर्मिनोलॉजी आ गई है सर, साइबर फिजिकल सिस्टम्स। उसको टर्मिनोलॉजी इज अ डिफरेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी एंड सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो साइबर फिजिकल सिस्टम्स, तो उस समय वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स था इनका नाम। तो हमने वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स बनाए थे जब इंडिया में बन नहीं रहे थे और वर्ल्ड में बहुत कम लोग बना रहे थे, तो हमने वो बना के लॉन्च किए थे, कुछ लोगों को दिए थे, DOT वगैरह किए हैं, कुछ वायरलेस स्टेथोस्कोप बनाए हैं, डर्मेटोस्कोप, टीचिंग स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट स्लाइड। तो मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेट्स जो डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, वो हम बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, एक जो बहुत अच्छा हमारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, जिसको हमने जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगाता है कान पे, वो होता है मैकेनिकल, उसमें साउंड सुनती है। हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, वायरलेस बना दिया, और रिमोट से उसको डॉक्टर उठा सकता है, रिमोट से हम पेशेंट को डायग्नोसिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम यूज कर रहे हैं प्राइमरीली निमोनिया का एक केसेस है, सर्टेन केसेस होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी बच्चा की डेथ हो जाती है, एंड वहाँ पे जो गांव में डॉक्टर है उसको पता भी नहीं चलता, बिफोर ही गेट्स टू रियलाइज दैट दिस इज अ निमोनिया केस, चाइल्ड डाइज। इंडिया का बहुत हाई क्रिटिकल चीज है, इसके पैरामीटर जो इंडिया के बहुत डाउन है, तो इट्स अ बिग नेशनल फोकस। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया जो आप रिमोट में बच्चे के यहाँ पे लगाएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये निमोनिया है कि नहीं है। और कैसे वो बता रहा है, बिकॉज उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम चल रहा है। So that artificial intelligence, which is a big name today, everybody is running after artificial intelligence. तो वो वाला पार्ट हमने निमोनिया के लिए करके उस स्टेथोस्कोप के अंदर डाल दिया है, and that's what we call as smart stethoscope. Right? So this type of things we have done. Somewhere around 2008, एक organization है नापी, National Agri-Food Biotechnology Institute. The director of that organization discussed, said that कि हमने हाई टेक ग्रीन हाउस बनाना है। अभी इसमें शायद नहीं है, तो लेकिन आपको मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग इन दैट। So that high tech greenhouse, he said, cost me around 2 crores when I import from some other country, Israel or something. So can you do it? So we entered agriculture with that, and we did high tech greenhouse जो 2 crore का उनको quotations आई थी, वो हमने around 60 lakhs का बनाया, which included actually the major cost was ACs, air conditioned thing was completely air conditioned with the high degree of temperature, humidity, सबका maintenance of those things. So we started with that, and thereafter उसके basis पे हम protected cultivation में आ गए। हमारा काम जो है वो basically electronics और control systems वगैरह का है। We are not into actually crops, we are not into कि कौन सी crop लगानी चाहिए, कहाँ बेचनी चाहिए, but we are into the controls. तो उसके बेसिस पे हमने काफी सारी इंस्टॉलेशंस की। सबसे पहले नाभी में ही स्टार्ट किया, नाभी में किया, तो नाभी को देख के उस समय पे IRI was only place with high tech greenhouse in India, so सभी रिसर्चर्स वहाँ पे जाते थे IRI। so नाभी ने बनाया, नाभी को देख के IRI itself asked us to develop high tech greenhouses at IRI, so we did 8 for them, and thereafter धीरे-धीरे प्राइवेट कंपनीज उसमें आ गई, और वो then we stopped that, we entered into hydroponics, we entered into aquaponics, we entered like that. Now we have people, market में we have entrepreneurs and
vendors for hydroponics, aquaponics and various other things. So now we are entering into slightly more complex things. Next slide. ये सब हमने installations की हैं. आप देख सकते हैं hydroponics, greenhouse, aquaponics based हम turnkey basis पे करी हैं and primarily for their research. Because एक टाइप की greenhouses यहाँ all these systems are there which are for the farmer. जिसको इतनी ज़्यादा automation की ज़रूरत नहीं है and cost is the major thing there. But the other kind of things are high-tech things where the precision is very important and the scientists want to work on it. Scientists ने क्या करना है वहाँ पे ये सब study करना है कि क्या crops लगाऊं मैं, क्या crops को क्या nutrients कितने समय के लिए दूं, कितना उसको क्या temperatures maintain करूं, कौन सी variety है या varietal research, वो सब के लिए scientists are using research greenhouses, high-tech hydroponic systems, high-tech controlled systems. So it is two different kind of markets are there. One is for the farmer who wants to do it low cost, large scale. The other is for the scientist who wants to do it for very precision, highly controlled, and maybe not for such a big scale, maybe 100 square meter or something like that. So we are actually focused only on the research and higher part things. Okay, so these things installations we did for the research. Next slide, please. And now we are into more of things related to this. One is we are developing a unmanned ground vehicle, which is you can say robo for smart spray of chemicals. Then smart irrigation you already are aware of. Smart irrigation is IoT based irrigation where the sensors are installed at various places and based on the requirement of the soil or maybe the plant, maybe various other conditions also like whether the rain is forecasted or not. So with those inputs in the background, the irrigation is given to a given area or not. So those things are done automatically by the smart irrigation systems. So those things and crop health assessment के लिए AI based systems are there where mobile phone based or some other camera based systems are there where you click the image of the plant and you get to know what is the deficiency of the which chemical or what is the disease that is appearing, that is diagnosis, and then also you can have for prediction, like certain pest grows in certain kind of conditions, climatic conditions में कोई pest जो है वो उसको अच्छी condition मिल जाती है वो grow कर जाता है, तो उसके लिए क्या है? There are sensors which will automatically analyze these things and predict if this kind of condition is possible. Such and such pest may appear. So those kind of predictions can be done. Yield prediction can be done based on the flowering stage. Look, before that, even before flowering, you can understand कि ये conditions हैं, तो ये होगा. Which expert scientists may be aware, they be knowing. But every time expert scientists cannot go at every place, every farmer, and cannot tell everything. So the AI system can do that. So these are the things which we did, and all these things I thought are very important. So therefore I focused on these, and these are the things which I think probably can contribute more to you as an entrepreneur rather than on. आपको सर कोई specific query है सर? नहीं उधर नहीं वो लगा मुझे वो थोड़ा सा बिजी थे तो नहीं सर कुछ है तो मेरे को बताइए सर नहीं if I'm not like I'll also like to be very focused on you कि अगर आपको कोई specific चीज चाहिए ना वो मैं बताऊंगा uselessly I should not be okay so this is what now set of things I would be now concentrating right कुछ होगा ना सर मेरे को बताइए and I'll answer your questions very frankly. Okay, so next slide. We all know the agriculture imperatives. You know, वैसे ज़्यादा आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा entrepreneur को मालूम है क्योंकि वो actual जगह पे है. Scientist को भी एक certain चीजें मालूम है, बहुत सी चीजों के least bothered. The entrepreneur knows the best. And what is his concern? He wants less expenses, more and good crop, and therefore more money. Right? Now expenses कहाँ से हो रहे हैं? उसको वो analyze वो खुद करता है, लेकिन as a scientist you also need to analyze कि expenses कहाँ पे हो रहे हैं? You do it. I know you already do it. Land का expense है, water का expense है, water are already going scarce.
फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, और उसकी वेरियस अदर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब समझने के लिए कि इसको कहाँ पे क्या रिड्यूस कर सकते हैं, मैंने छोटे से वैसे एक बनाई थी which I think you already know, but just because you answered questioned certain things, I think this thing will help you understand your own thoughts. You will able to be forming your own thoughts rather than use इसने ऐसा करा तो कैसे करो, वैसे सब साइंटिस्ट हैं यार, every entrepreneur is a scientist in himself, but to some extent, not replacing the scientist also. Okay. So what we are talking is that most of the inputs that you give to the plant generally we give in the root zone. अगर वो land occupy कर रहा है तो root zone is roughly proportional to the upper zone जो भी है, right? So water you are giving to the root, nutrients mostly you are giving to the root, pesticides you may be spraying on the leaf or whatever, but सो रूट जोन का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एरिया है, और वो जब वो सॉइल में है तो लॉट ऑफ थिंग इज गेटिंग वेस्टेड. हसन सर सेड 90% इज गेटिंग वेस्टेड. ओके, रफली 90. नेक्स्ट स्लाइड. सो इसको हम जब रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से तो क्या हो रहा है, वहां पे हम उसको डायरेक्टली उसके रूट को वही चीजें दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, दे सकते हैं. And obviously you don't need to give sunlight there. Sunlight नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें मिल रही हैं तो खत्म. बाकी सारी चीजें उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्लांट ग्रो करेगा. प्लांट को पता नहीं है कि मैं हवा में हूँ, कहाँ पे हूँ. प्लांट ने तो अगर उसको ये कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है, और उसको होल्ड डेफिनेटली कोई ना कोई करना चाहिए, अदरवाइज स्पेस में झूमता रहेगा. So keep that slide. So when we do it in water, we can do it more efficiently. The biggest efficiency comes from the fact that it can be reused. प्लांट ने नहीं absorb किया, उसको आप टैंक में इकट्ठा कर लो और इसको चला दो, ठीक है. So the efficiency comes from that. Next slide please. So therefore, this when we grow things in the water media, उसका supply के लिए water media, we call it as hydroponics. और उसके benefits क्या है? सारे benefits हैं. Water की saving more than 80%. लैंड यूज का एफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज सम प्लेसेस देयर आर हिल्स में आप अगर खेती नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं है, तो वहां पे आप हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड सिस्टम लगा सकते हैं. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो पेस्टिसाइड्स की कम यूज करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ सॉइल बेस्ड जो डिजीजेज हैं वो नहीं आ रही. सॉइल बेस्ड डिजीजेज बहुत सारी हैं जो कि आती रहती हैं. फ्री फ्रॉम वीड्स, वीडिसाइड भी नहीं चाहिए. So more crops per year. If you're doing it in a controlled environment, you can do it more crops per year. साल में 2 crops लेने की बजाय 3 की बजाय 4 भी ले सकते हैं. Multiple, more than that. Next slide. Now instead of water, अगर हम उसको fine mist दे दें पानी के अंदर, वही वाला जो न्यूट्रिएंट वाटर हम दे रहे थे वहां पे हाइड्रोपोनिक्स में, वही हम उसको मिस्ट बना के दे दें, रूट को वही सारी चीजें मिल जाए, तो डन, रूट कैन प्लांट कैन ग्रो. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज एरोपोनिक्स. नाउ एक इसके साथ कॉन्सेप्ट और है जो शायद आपने पढ़ी होगी, दैट इज एक्वापोनिक्स. नाउ एक्वापोनिक्स में हम क्या करते हैं, प्लांट को चाहिए nitrates and nitrites. Fishes and every living organism produces urea, ammonia, that kind of things as a waste. So if you can convert that urea, ammonia kind of waste, which are all nitrogenous waste, उनको हम nitrites and nitrates में convert कर सकते हैं, तो we can use the waste of this for that. So when we grow aquaculture, मतलब मच्छी पालन, फिशेस, एक्वाकल्चर, और उनसे जो वहां से जो पानी निकल रहा है उसके पानी के अंदर अमोनिया एंड यूरिया एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी इन एक्सेस. सो इफ वी हैव अ बायोफिल्टर काइंड ऑफ कांसेप्ट जिसमें नेचुरली बैक्टीरियाज इन सब नाइट्रोजनस मटेरियल को, जो अपने रेजोबियम बैक्टीरिया और वो सब पड़े ही होंगे, तो वही टाइप के बैक्टीरिया अगर हम यूज करके वो सारी चीजों को हम कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, तो
प्लांट्स की न्यूट्रिशन के हेल्प करता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हैविंग फिश टैंक्स. फिश टैंक में फिशेस रखी हुई हैं जो टिपिकली हमारे यहाँ पे जो हमने बनाया था उसमें तलापिया एंड कैटफिश यूज हो रही थी. कैटफिश इज स्लाइटली एग्रेसिव, तो देखना पड़ता है वो कॉम्बिनेशन. देन फ्रॉम दिस वी आर गिविंग टू द बायोफिल्टर टैंक जिसमें 2-3 सेगमेंट्स होते हैं. तो उसमें सेगमेंट्स में हम बैक्टीरिया का स्पेस दे देते हैं. सो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इट इनटू द न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट. Then that nutrient water goes into the hydroponic system. Hydroponic system में you can have various type of things, and then it gets collected in a tank जहाँ पे fresh water बन जाता है. वो fresh water can be given back to the fish tank. So this complete cycle में आपने input क्या डाला? Fish का feed. अगर वो भी अगर किसी तरह से fish का feed भी आपका organic है, तो the complete thing becomes your organic. So organic fish, organic farming, organic everything, and less diseases, nutrition का cost कम हो गई और बाकी सारी चीजें का आपको benefit हो गया. So इसमें here we are getting double benefit, not just growing plants, but also getting the fishes. So this is the aquaponic system, and we did it for Gadwasu Guru Angad Dev Veterinary University at Ludhiana. Next slide. And then obviously you can take vertical things, जैसा कि हसन साहब ने बताया, उनको vertically stack कर दीजिए सारी gullies को, तो we get a vertical farm. Next slide. And we did this aquaponics at Ludhiana, जिसका कुछ ये images आपके सामने रखी हैं मैंने, और वहाँ पे मतलब without using the external chemical nutrition, जो hydroponics में हम chemical nutrition देते हैं, which is your macronutrients and micronutrients combination है. And one of the very good example of nutrition for hydroponics is Hogland solution, जो आपने agriculture scientist को सभी को मालूम होगा. Hogland solution is used for simply giving to the hydroponics. So वो chemicals डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है. इधर जो fish tank दिखाया उसमें fishes को हम use रखी हुई हैं. And fishes को feed, of course, certain organic things are there, but sometimes inorganic भी आजकल चीजें दी जा रही हैं उनको grow करने के लिए. Some proteins are there. So वो fishes का जो वहाँ से water जो है sediment नीचे जम जाता है. Those we are collecting in another tank, which is a biofilter tank. Biofilter से pipes में जा रहा है. These are the pipes are hydroponics pipes. The pipes normal 6 इंची पाइप जो होती है हमारी प्लम्बिंग पाइप, उससे बनाए हुए हैं हमने. और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी अच्छी क्रॉप चल रही है. This is excellent, and the university is very happy. Every few months they conduct a farmer meet और ये वो तो बहुत खुशी से बताते हैं. और उसके डेफिनेटली बेनिफिट क्या हो गए? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी, लैंड यूज बेनिफिट उसको ऑटोमेटिकली आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. But the limitation of all these things is high initial cost. अगर आप protected करेंगे तब भी आपकी cost बढ़ रही है. आप उसको whatever greenhouse or whatever you are making, you have to, the cost increases. If you're getting the controls also automated, तो वो तो आपकी cost definitely बढ़ रही है. तो cost तो नहीं है. और इनमें सभी चीजों में of course जो आपके financial matters हैं, business matters हैं, वो तो critical होंगे. कौन सी crop लेनी है, जिसकी market हो, वो those things. But roughly speaking, I can say that hydroponics, aquaponics kind of things are very, very excellent for leafy things. Aeroponics, as सबने बताया कि पोटैटो में बहुत अच्छा कर रहा है. CPLA जलंधर में उन्होंने aeroponics के बहुत अच्छे सिस्टम लगा रखे हैं. And seed production में use करते हैं वो, but excellent, huge things, and they are very, very, very. Okay, next slide. Now I'll just try to. I hope I was useful up till now. I'll try to slightly change the next slide. मतलब उसको ठीक कर दो. Animation. Okay. All right. So I'll try to focus into certain few more things. If you have certain queries, you can ask me. Or how much time do you have, sir? You can take more 15 to 20 minutes.
नेक्स्ट स्लाइड। बहुत से तरह के हैं हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एरोपोनिक्स आपको पता चल गया। हाइड्रोपोनिक्स जो है बेसिकली अगर आपने पढ़ लिया है तो आई विल स्किप इट, अगर आपको नहीं है तो फिर आई जस्ट क्विकली से आई थिंक लेक्चर इज ऑलरेडी देयर ना, सो स्किप कर दीजिए इसको। फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम या एप एंड फ्लो। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फ्लो वाला सिस्टम है जो मोस्ट पॉपुलर है, मैं इसके बारे में एक दो लाइन बोल देता हूँ। कॉन्टिन्यूअस फ्लो वाला सिस्टम है वेयर नॉर्मली यू हैव अ न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। सबसे जैसे प्लांट्स में नीचे आप देख रहे होंगे, दिस इज ए लाइन ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन ए गली, और उसके रूट जोन के आसपास, रूट के बिल्कुल लोअर एरिया में ही हम न्यूट्रिएंट फ्लो कर रहा है एंड इट कैन फ्लो कॉन्टिन्यूअसली। सो वहां से प्लांट अपना अब्सॉर्ब करता रहता है। द अदर सिस्टम इज दैट यू फ्लड इट एंड देन यू हैव टू ड्रेन इट, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर आप फ्लड करके रख देंगे ना तो प्लांट मर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक इज देयर वेयर कुछ फ्लो उसका बहुत थोड़ी जगह में बना रहता है, या उसको स्प्रिंकल करते हैं, either a layer of nutrient is given or you sprinkle it. Those are the two things. Now when we talk of these few slides I made here only now how do we get into the business in all these things? There are two set of things which I could just quickly think. One set of things is about the agri business, about growing plants, selling them and all the related stuff. So अगर आपको फास्ट ग्रोथ वाला काम है तो नर्सरी इज अ वेरी गुड प्लेस तो बिजनेस टू डू, because hydroponics, aquaponics, all these things are very genetically pure. All protected systems, you can maintain the genetic pureness of the purity of the plants. So therefore seed production में ये बहुत काम आते हैं, जो आपने ऑलरेडी सुन लिया है इसके बारे में डिटेल लेक्चर। Now the critical things is protocol. Protocol is about कि आपने मान लीजिए आपने सोच लिया कि मैं इसमें लेट्यूस लगाऊंगा, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स मैक्सिमम बेनिफिशियल रहते हैं, तो आपने सोचा लेट्यूस लगाएंगे। लेट्यूस जो है सभी मैकडोनल्ड्स और ये फास्ट फूड चेन्स पे बिकता है, और लेट्यूस के लिए कौन सी वैरायटी लगानी है, कितना घंटे उसको पानी चलाना है, कितने घंटे रोकना है, दोस प्रोटोकॉल्स। कब सनलाइट आपकी होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, या सनलाइट को रोकने के लिए भी सन शेड्स आते हैं, आपको मालूम होगा। तो वो उसकी जो मैनेजमेंट है, दोस आर पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स व्हिच एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो आपने कहा कि हमें वो प्रोटोकॉल्स बताए जाए, हमें वो सारी चीजें बताई जाए कि क्या कैसे करें, कब करें, कैसे करें, तो कहाँ बेचें। So वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो अभी हमारे साइंटिस्ट खुद, I personally feel that they are actually working on those things, because wherever we have installed they are asking कि अरे हम इसको रिसर्च के लिए चाहिए, क्या करना है रिसर्च, यही सब प्रोटोकॉल्स डेवलप करने हैं। सिलेक्शन ऑफ मार्केट इज क्रिटिकल, और मार्केट सिलेक्ट कैसे करते हैं आप, डिमांड ऑफ व्हाट पर्टिकुलर थिंग यू आर गोइंग टू डेवलप और प्रोड्यूस, क्या सेल प्राइस है, करंटली कहाँ से मिलता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, क्या आपकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट एंड रिलेटेड ऑल द एस्पेक्ट्स, फंडिंग कहाँ से लानी है, वो सब फंडिंग की कॉस्ट एक्सेस। सो दिस इज वन सेट ऑफ बिजनेस व्हिच इज अबाउट एग्री बिजनेस, जिसमें कि प्रोटेक्टेड के केस में आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में लोकेशन प्लानिंग, which area you want, Srinagar you want or some other place you want, size of your farm, size of whatever thing you are doing. Site selection is very, very critical in the sense that sunlight is very important for the plants. In this area, Jammu and Kashmir, because the temperature would normally go below certain level, not suitable for most of the plants. So आपको क्या चाहिए, वो एरिया चाहिए जहाँ ज़्यादा सनलाइट आए, not the area with कम सनलाइट है। जैसे some other places in the our side we prefer कि भी इतनी सनलाइट नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ ठंड ज़्यादा है, तो इनको आपको सनलाइट को एक्सपोज करके रखना पड़ेगा, मैक्सिमम फेसिंग टुवर्ड्स द सन। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्रीन हाउस
face the sun. Which crops, markets, all these things you will do. Then obviously the design of greenhouse, किस type का आपने बनाना है. Like in our place, in your Jammu and Kashmir, you will develop a greenhouse which does not have a ventilation. हमारे वहाँ पे ventilation बहुत जरूरी है, कैमरे टाइप का, ऊपर से वो खुला हो ताकि गर्म हवा बाहर से निकलती जाए. Normal ठंडी हवा हम ले सकें, गर्म हवा निकलती जाए. But here you try to do something opposite. So that kind of design is very critical here. चैम्बर्स बनाने हैं कि खुला एरिया रखना है कि कैसा रखना है, एक्सटर्नल एयर लेनी है नहीं लेनी है, किस टाइप के आपने उसके यूज करने हैं. अगर हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं तो क्या प्लम्बिंग लगानी है, कितने प्लांट्स लगाने हैं, कितने शेल्फ्स लगानी है, और फिश टैंक वगैरह कर रहे हैं अगर आप तो फिर उसके ऑपरेशन और मैनेजमेंट में which I could think of is agriculture management, which is the area which you already discussed and probably know more than me. The engineering management is there now. एक विजुअल ट्रांसपेरेंसी वो बोलते हैं कि 80% है, जो पॉलीकार्बोनेट शीट की स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी है. सिमिलरली आईआर ट्रांसपेरेंसी है, वो कितनी अंदर जाती है, अंदर जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए. बाहर ना जाने के लिए उसकी इनसाइड को कोटिंग कर देते हैं, वो स्पेशल कोटिंग कर लेते हैं. बट जितना ये सब करते जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ती जाएगी. अब ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कितने एरिया के लिए बनाना है, कितनी इनकी कॉस्ट बढ़ रही है और कितनी में सेविंग कर रहा हूँ. All those things have to be worked out. There are no thumb rules because I am not worked as per that. जब पर्टिकुलर केस के लिए हम केस टू केस बेसिस पे काम करते हैं, जिस पर्टिकुलर केस के लिए हमने किया था वहाँ पे वो सब कुछ एनालाइज करके उनको सोल्यूशन दिया था. तो आपके केस में क्या है वो मतलब I can understand, discuss, plan and work out. मतलब ऑफ द हैंड मैं ये नहीं कहूँगा ये करो, क्योंकि मैं मतलब वो नहीं एक्सटेंशन साइंटिस्ट नहीं हूँ, आई एम रिसर्च साइंटिस्ट. So I'll quickly speak a few things when 10 minutes. I'll quickly speak about few things. Now there are controls which we actually work on are controls and controls क्या मैनुअल हो सकते हैं. सबसे सिंपलेस्ट जो फार्मर को चाहिए वो क्या करता है, जो भी अगर हाइड्रोपोनिक्स यूज कर रहा है या कैसे भी कर रहा है उसमें मैनुअली टेम्परेचर के पैरामीटर्स, सब चीज़ों के पैरामीटर्स चेक करेगा, मीटर लगाएगा, देखेगा और उसके बेसिस पे अपना उसमें न्यूट्रिशन डालना है या नहीं डालना है, या पानी ऐड करना है या बफर वगैरह डालने हैं या मोटर चलानी है नहीं कर बंद कर, राइट. ऑल दोस थिंग्स का प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फार्मर कर सकता है आसानी से और वो वॉल्व कंट्रोल करके जोन वाइज कर सकता है कि अभी इस एरिया में पानी लगा दिया, फिर अगले उस एरिया में पानी लगा दिया, फिर उस एरिया में लगा दिया, like that you can do it. So that's a manual which is most easy, cheap and obviously protocol easy होने चाहिए, प्लांट आपका ऐसा होना चाहिए. Next slide. Next slide. सेमी ऑटोमेटेड में क्या है, पैरामीटर्स सिस्टम मेजर करता है. हम कोई ना कोई मॉनिटरिंग भी आता जाता देखता रहता है या इवन रिमोट पे हम उसको इंटरनेट पे मॉनिटर करते रहते हैं. यहाँ टेम्परेचर कितना चल रहा है, ठीक है. ऑल्दो इतना क्रिटिकल नहीं होता कि एवरी 10 मिनट पे आपको मॉनिटर करना पड़े, but roughly you can monitor. So semi automatic में आपका ये सारे पैरामीटर सिस्टम को जा रहे हैं. सिस्टम एक छोटा सा इतना डिवाइस है और मे बी एक कंप्यूटर जो सिस्टम अपने आप उसके अंदर प्लानिंग के बेसिस पे यूज कर रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. प्रोग्रामेबल सिस्टम है जो इससे स्लाइटली हायर है इन द सेंस दैट सेमी ऑटोमेटिक में आपने एक जो फिक्स कर दिया वो भी चलता रहता है. अब उसका ग्रोथ स्टेज प्लांट की डिफरेंट होगी तो आपको थोड़ा सा उसके चेंजेस करनी पड़ेगी. प्रोग्रामेबल में आप सारा कुछ एट वन गो प्लानिंग करके देख सकते हैं कि 6 महीने के लिए ये चलना है, जब प्लांट इतना हो जाएगा तो ये करना वो करना अपने आप करते हैं. तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसका जो है हम मोस्टली अभी वो वाली स्टेज में है. प्रोग्रामेबल सिस्टम हम देते हैं जो हमने दिया है, जिसमें एक ओवरव्यू ये है सिस्टम का जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया. Now the same whole system is applicable whether you do it for greenhouse controls, hydroponics, aquaponics or closed chamber controls. सब roughly system same है. Only difference is आपका सेंसर वगैरह थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है. So इसमें if you want I can discuss but otherwise it's pretty obvious. मैं quickly इधर आके आपको बोल देता हूँ दूसरा चीजें. हम
2-3 न्यूट्रिएंट टैंक्स रखते हैं, एक वाटर टैंक रखते हैं, कुछ बफर जोन बफर टैंक रखते हैं, वहाँ से पानी मिक्सिंग टैंक में आता है। मिक्सिंग टैंक से वी यूज अ पंप विच इज मस्ट, ऑलमोस्ट अ मस्ट, एंड सेट अप वॉल्व्स। सो एक जोन के लिए एक वॉल्व है, दूसरे जोन के लिए दूसरी वॉल्व है, यहाँ सम सेट ऑफ पाइप्स के लिए ये है, सम सेट ऑफ पाइप्स के लिए ये। तो ये पाइप पंप चला, ये वॉल्व भी इसको चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, राइट। सो पानी सर्कुलेट हो गया, वापस आ गया, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू थिंग्स लाइक 15 मिनट्स के लिए सर्कुलेशन। लाइक एक शिलोंग में हमने लगाया, उन्होंने ये सब वर्कआउट करके बताया कि मोस्ट ऑप्टिमल जो है 15 मिनट आप चलाइए, 15 मिनट बंद रखिए, 15 मिनट का साइकिलिंग कर दीजिए, 15 मिनट बाकी उसको एयर रहेगी प्लांट रूट को। So this continues like that for the 24 hours. ये सब के अंदर एक ECPH टेम्परेचर ऑक्सीजन वगैरह के सेंसर लगे हुए हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को जा रहे हैं, which can be स्मॉल कंप्यूटर और लार्ज कंप्यूटर। एंड ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, इन सब का कंट्रोल्स दे रहा है, कंट्रोल्स मिक्सिंग टैंक या किसी चीज को उसमें कंट्रोल कर रहा है। So you can monitor this on the internet if you provide internet link, and we call it as IoT, Internet of Things. IoT stands for Internet of Things. अगर आपने IoT उसको बनाना है तो उसको इंटरनेट पे लिंक लगा दीजिए तो IoT बन जाएगा। इसका ही दूसरा वे ऑफ टेलिंग डिटेल्स में इसको छोड़िए, आगे चलिए। These are the sensors which we actually have used in one particular location. Next slide. I think आपको ये सब नहीं चाहिए होंगे, इसलिए मैं इनको स्किप करता जा रहा हूँ। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा कि हमें बड़ा कंप्यूटर वाला टच स्क्रीन, बड़ा इतना बड़ा कियोस्क लगा के दीजिए, तो हमने वहाँ पे इनके लिए तो वैसा किया था। That was in Solan. Next slide. Okay, now ये तो हार्डवेयर था जो मैंने आपको बताया, उसका सॉफ्टवेयर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में अपने आप एक फुल चैप्टर है, फुल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो फुल सॉफ्टवेयर पे ही सारा है। बट रफली स्पीकिंग आई कैन से इज दैट वन, कितने लेवल का आपने कंट्रोल देना है उसको, क्या प्रोग्रामिंग करनी है, कितना टेम्परेचर हो जाए तो वो बढ़ा देना है या घटा देना है, वो सारी प्रोग्रामिंग है। अगर वो रिसर्च टाइप का सिस्टम है या कॉन्टिन्यूसली सेल्फ ऑपरेटेड है तो उसकी रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक चलती रहेगी। रिकॉर्डिंग वो पैरामीटर अपने लेता रहेगा कि सुबह इतना टेम्परेचर था, शाम को इतना है, ये किया वो किया, धूप आ गई तो ये हो गया, वो गया, तो सब चलता रहता है। और वो रिसर्च साइंटिस्ट बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। इवन sometimes it can be useful if the farmer wants to view it on the remote monitor, अपने मोबाइल पे बैठ के देखता रहे तो उसको पता चलता रहेगा कि हाँ चल रहा है। हाइड्रोपोनिक्स है तो उसमें हम फ्लो टाइमिंग्स, फ्लो कंट्रोल, वो सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसका डिपेंड करता है कि आपने जैसे बॉटम राइट में जो है वो हमने ग्राफ बनाए हुए कि इस टाइप के ग्राफ उस पे चल रहे हैं, इधर कुछ उसके सेटिंग का पैरामीटर है, ऊपर कुछ वो मॉनिटरिंग है कि अभी 26 डिग्री 26.5 टेम्परेचर चल रहा है, 700 EC चल रहा है, TS 6.5 चल रहा है, इस तरह से। तो वो दोस्त मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट अगर आप चाहें तो मैं आपको सेंसस पे बता सकता हूं, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई विल नॉट टॉक। तो सर इम्पोर्टेंट है, ओके, अच्छी बात है। ओके, दिस इज माय स्पेशलिटी, आई कुड हैव टॉक्ड 2 hours on this, but anyway, तो सेंसर्स के अंदर रेंज, एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन और इम्पोर्टेंट थिंग्स कि किस डिग्री से किस डिग्री तक लेना है, क्या एक्यूरेट होना, कितना एक्यूरेसी होना चाहिए, कितना उसका लेटेंसी होना चाहिए, कितने टाइम बाद वो अपना इनपुट्स देता है। सेंसर्स इन सबको मैं ना बोलता ही जा रहा हूँ, मतलब अगर आपको कोई चीज लगे, क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत है, मैंने इसलिए इतना ज़्यादा डाल दिया था कि मेरे को पता नहीं था कि क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट होगी। तो जिस चीज़ को आपको चाहिए होगा वो मेरे को बता देना, अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू स्किप एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स वेरी फास्ट। मोस्ट ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, हाँ, इसलिए तो मैं सारी चीज़ का ओवरव्यू, ग्रीन हाउस एडवांटेज, हाँ, इसलिए मैं सभी चीज़ का ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट द डिटेल्स। सेंसर्स में स्किप इसलिए कर रहा था कि इनको शायद अभी डिटेल्स वर्क करने की जरूरत नहीं है, जब ये एक्चुअल में कुछ इंस्टॉल वगैरह करेंगे तब शायद ये सब समझना चाहेंगे।
The sensors can be digital, analog. Digital sensors are actually preferred, easy to use, but slightly costly. Analog sensors are easy, but slightly difficult to use, but cheaper. Sensors can be wired. Wiring जो है उसकी 2-3 तरह की होती है. UART वाले पुराने होते थे, फिर आजकल USB आ गए हैं. USB के भी लेटेस्ट एक CAN बेस्ड है जो कि काफी दूर तक चला जाता है, और उसको हमने जो किया है वो CAN बेस्ड सिस्टम से किए हैं सारे. और द सिस्टम्स कैन बी वायरलेस. वायरलेस में आजकल सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो ब्लूटूथ लो एनर्जी वाला सिस्टम्स आ गए हैं जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है. एंड ब्लूटूथ जो हम पहले मोबाइल फोन्स में होता था ब्लूटूथ 4.0 से पहले वाला, वो इतना एफिशिएंट नहीं था, वो यूजलेस था. उसको यूज करते थे तो बैटरी बड़ी जल्दी खत्म होती थी. अब जो ब्लूटूथ आ गया है ब्लूटूथ 4.0 से बाद वाला, अब तो 5.2 चल रहा है अभी, तो वो सारे बहुत एनर्जी एफिशिएंट है और बैटरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है. एक ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं या वाईफाई यूज कर सकते हैं. अगर आपका वाईफाई अवेलेबल है तो वाईफाई कर सकते हैं, नहीं तो ब्लूटूथ इज अ वेरी इजी एंड चीप मेथड टू यूज वायरलेस सेंसर्स. आईओटी वाला जितना भी काम हो रहा है वो ब्लूटूथ से पिक किया जाता है, गेटवे तक ब्लूटूथ से लेके आते हैं. गेटवे से आगे जो दे रहे हैं इंटरनेट पे, वो हम वाईफाई से देते हैं जनरली. राइट, सो इस टाइप का ये सिस्टम्स हैं. इसके डिटेल्स और टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीजें हैं, बट वी कैन नॉट डिस्कस दिस थिंग्स. नेक्स्ट स्लाइड. एनर्जी में जो मैं चीज आप बोल रहे थे वही है ये. नेक्स्ट स्लाइड. बेसिकली सन की हीट का यूज करना इज द बिगेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग एनर्जी. और मे बी सम अदर जैसे जियोथर्मल आजकल लोग यूज कर रहे हैं. हम भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट हम एक स्टार्ट करने वाले हैं ले में, जहाँ पे हम जमीन की जियोथर्मल एनर्जी जो है हीट से ग्रीन हाउस को हीट करने की ट्राई करेंगे. मतलब अभी वी आर नॉट श्योर हाउ मच वी विल बी सक्सेसफुल, बट वी विल ट्राई दैट. नेक्स्ट स्लाइड. So one part is the civil structure and the plumbing system. Next slide. इसमें देखिए जो कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व है ना, सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी में इन्वॉल्व है, सिविल स्ट्रक्चर में और प्लम्बिंग में. जो मैंने 100 स्क्वायर मीटर्स के एरिया के लिए वर्क किए थे, हमने लगाए थे 5 लाख का सिस्टम है. जहाँ पे भी लगाए हैं हमने 7-8 लगा चुके हैं अभी, तो वो 5 लाख के आसपास के सिस्टम है. बट कुछ कोई लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को फ्लोरिंग एकदम टाइट फ्लोरिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहाँ पे फैंसी लाइट्स चाहिए, फैंसी ये चाहिए, कंट्रोल कंप्यूटर, तो वो 10 लाख तक भी चला जा सकता है. बट अदरवाइज 4-5 लाख में आपका बढ़िया सिस्टम बन जाएगा. एंड देन देयर इज सब्सिडी आल्सो इन दैट यू कैन वर्क ऑन दोस थिंग्स. ये वाला नहीं आप हीट अप करना चाहते हैं एंड लाइट आल्सो ऑब्वियसली पार्ट फॉर गोइंग प्लांट्स. हाँ नहीं ये वाला जो 5 लाख का कॉस्ट स्ट्रक्चर का बता रहे हैं. बट हियर इन योर केस देखिए हीटर का कॉस्ट जो है इस एरिया में इट नाउ द हीटिंग पार्ट आपने हीट किस तक लेनी है, 25 डिग्री हमें चाहिए. एंड प्लांट्स को भी मोस्टली 25 डिग्री इज द आइडियल 0 to 4 है ना. तो डस्ट ड्रॉप्स आर 25 जनरली. तो देखिए इसमें आपका हीटर जो भी नॉट लाइक 10 किलोवाट तो आराम से रहता है. 10 किलोवाट मींस स्ट्रेट अवे बेसिकली 10 मिनट्स पर आवर करना. So my understanding is initial cost would be like heater की जो cost है. देखिए अभी आपका 2 methods of heating है of this area. टेम्परेचर इंक्रीज करने के 2 methods हैं जो हम मेट्रो प्रोटेक्टेड में यूज कर लिया है. One is by heating the air, which is your hot doors और ये सब, और maybe और आजकल जो कार्बन रॉड वाले आते हैं. The one is that, but that heats your air and it heats your system. The other method is indirect heating by using the hot pipes.
तो हॉट पाइप्स वाला सिस्टम स्लाइटली मोर वो एफिशिएंट इन द सेंस दैट जो आप डायरेक्ट हीटिंग एयर की करते हैं वो लीफ को सम उसकी ड्राइनेस बढ़ा देती है, ह्यूमिडिटी वगैरह का सारे ना वो इफेक्ट ज़्यादा करती है। जो आप पाइप बेस्ड करते हैं उसमें इतनी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट नहीं होता। सो आइडियली पाइप बेस्ड सिस्टम्स आर प्रेफर्ड। फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह पे पाइप बेस्ड सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वो, बट दोज आर स्लाइटली मोर कॉस्टली इन द सेंस दैट देयर आर मोर लॉसेस टू द होल सिस्टम, and initial cost would definitely be somewhere like few lakhs in that, but your running cost would easily come देखिए आप 10 किलोवाट की चीजें दिन में कितनी देर चलाएंगे उसको वो थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कितना निकलेगा उसका। 1 किलोवाट 1 घंटा चलाने के लिए हमारे यहाँ पे 10 रुपए की यूनिट लगती है। तो आप 10 किलोवाट चलाने के लिए 10 into 10 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से आप देख लीजिए कितने घंटे उसको चलाना है, उसके हिसाब से वर्कआउट कर लीजिए कितना। मतलब ये सारी चीजें ऑफ द शेल्फ ऐसे मतलब मैं आई कैन नॉट जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज एंड ऑफ कोर्स दीस हैव टू बी प्लान्ड वर्कड आउट। सो प्लम्बिंग सिस्टम में हमारा जो कॉस्ट लगती थी वो 5 से 7 लाख लगती है for 2000 plants with 1000 liter of water tank and circulating system, pump, ये वो सारा कुछ मिला, balls control, RO system भी हम लगाते हैं उसमें और वो सारे सिस्टम लगाते हैं। RO system is an important consideration, RO system चाहिए होता है, depends on the water quality in your area। गलीज walls, गलीज standard हम जो लेते हैं मार्केट readily available गलीज लेते हैं पॉलीकार्बोनेट शीट की, लेकिन अगर आपने कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो स्टैंडर्ड जो सिंपल ये पाइप आती हैं जो हम प्लम्बिंग में घरों में लगाते हैं 6 इंची पाइप उसमें छेद करके लगा देते हैं, जहाँ पे हमने कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो वहाँ पे लगा देते हैं। सो हमारी कॉस्ट रफली वर्कड आउट टू बी समथिंग लाइक 10 से 15 लाख फॉर द स्ट्रक्चर एंड सिविल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट स्लाइड। और कंट्रोल सिस्टम में जो फुली कंट्रोल्ड सिस्टम है जो हम बना के दे रहे हैं वो 5 लाख के करीब हमारा सिस्टम है। बट अगर आपने मैनुअल लेना है तो मैनुअल सिस्टम में आप ये समझ के चलिए कि आपको 20-30 हजार में आपको 2-4 मॉनिटर्स मिल जाएंगे, 2-4 सेंसर मिल जाएंगे विच आर रिक्वायर्ड। अगर हाइड्रोपोनिक्स है तो ECPH का ले लीजिए, टेम्परेचर ऑफ कोर्स आपको चाहिए हर हालत में, ह्यूमिडिटी का एक ले लीजिए, ठीक है। लाइट तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि हाँ धूप आ रही है कि नहीं आ रही, तो लाइट का सेंसर स्पेसिफिक लेने का कुछ जरूरत नहीं है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ECPH। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स नहीं कर रहे ECPH को छोड़ दीजिए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को लीजिए और उसके बेसिस पे कंट्रोल कीजिए। मैनुअल सिस्टम लगाइए, कंट्रोल का आपका खत्म हो गया काम। सो दिस इज रफली द कॉस्ट व्हिच आई वर्कड आउट एंड 100 स्क्वायर मीटर का हम रफली जो एस्टिमेट किसी भी यूनिवर्सिटी को देते हैं 15 लाख से लेके डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज वो देते हैं उसको, which is actually controlled research greenhouse. It's not a production greenhouse. Please mind it very carefully. मैं 10 बार बोलूँगा तो भी ये मतलब कम होगा मेरे अगर 10 बार भी बोलूँ, because आप अगर सोच रहे हैं बिजनेस फार्मिंग बिजनेस के लिए then this costs are not related. Please do not consider these costs. Because वहाँ पे फिर हर एक कॉस्ट को दूसरी तरह से ऑप्टिमाइज किया जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें जो ऑप्टिमाइज है रिसर्च के लिए हाईटेक हाई प्रिसिशन बनाने के एंगल से की गई है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ हमारी कंसल्टेंसी कॉस्ट भी लग जाती है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द रफली द आइडिया एंड ऑनवर्ड्स 15 से 25-30 तक है वो और स्मॉल एरियाज, बट दैट्स अ रिसर्च थिंग नॉट प्रोडक्शन थिंग। प्रोडक्शन थिंग आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की आपकी मेन कॉस्ट है, स्ट्रक्चर और प्लम्बिंग की, वो आप देखिए कितना करना है। बाकी क्या कॉस्ट, बाकी तो आप अपने मेंटेन करके 2 बंदे वहाँ पे बिठा दीजिए, वो सारा दिन अपना पंप ऑन ऑफ करना है, क्या करना है, जो भी करना है वो करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगर कंट्रोल्स में और डिटेल समझना है तो ये सब चीजें हम समझते हैं कि कितनी देर चलाना है, बंद करना है, क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्या सारे पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं, क्या अलार्म्स देने हैं, इससे बढ़ गया टेम्परेचर तो कोई अलार्म आ जाए तो वो उसको इमीडिएटली बंदा आगे कुछ करे, मतलब कुछ फेलियर हो जाता है तो ये अलार्म की
जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। एस्टेट तक है। उसकी टेक्निक्स बहुत सारी हैं, सिंपल ऑन ऑफ द मैनुअल है। PID एक टेक्निक है विच यू कैन से रफली ओपन लूप सिस्टम जो हसन सर बोल रहे थे, फिर एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें फजी लॉजिक आ सकता है, न्यूरल नेटवर्क्स, बहुत सारी चीजें और आ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एक सिस्टम मैं और आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई क्लोज माय ऑल थिंग्स, इज द इंटेलिजेंस सिस्टम जो AI बेस्ड सिस्टम आ रहा है आजकल, which we are talking and which we as a research scientists are giving research proposal to the government of India. इसमें क्या हम दे रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ स्टेट बेस्ड, इमेज बेस्ड, प्लांट की फोटो खींचता रहेगा कैमरा एक, वो बताता रहेगा कि प्लांट का क्या स्टेज आ गई, प्लांट की ग्रोथ स्टेज, प्लांट की हेल्थ स्टेज, प्लांट की न्यूट्रिशन और डिजीज पॉसिबिलिटी, वो सारी चीजें वो सिस्टम अपने आप बताता रहेगा और किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस सिस्टम थे उसमें साइंटिस्ट को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई ये प्लांट है, मेरे को इसको 6 घंटे धूप तो मिनिमम चाहिए, तो वो 6 घंटे का प्लानिंग करके लगाएगा। बट दिस सिस्टम इज सच दैट प्लांट वैरायटी वगैरह सारा कुछ अपने आप कैलकुलेट करेगा कि ये प्लांट की ये वैरायटी को 6 घंटे धूप चाहिए या 7 घंटे चाहिए या 6.5 चाहिए, तो वो अपने आप कैलकुलेट करेगा, अपने आप प्लान करेगा, अपने आप सारा कुछ करेगा। All the things which a scientist is supposed to do will be done by the system. So that is AI based fully automated system. जैसे इंटेलिजेंट कार आ गई है आपकी, स्मार्ट कार्स या आप टेस्ला की कार्स हैं, वो सब कुछ अपने आप चलती हैं, उसमें किसी ड्राइवर की एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये वैसा सेल्फ ड्रिवन टाइप ऑफ सिस्टम की हमने प्रपोजल किया है गवर्नमेंट। So people in abroad are doing it, research papers are already there. हम नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट इंडिया में ये अभी शायद नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड। ये स्मार्ट सिस्टम का फिर मैं लास्ट इसी से एंड करूंगा। सो प्लांट ग्रोथ स्टेज बेस्ड हम स्मार्ट सिस्टम्स जो कह रहे हैं उसमें क्या, प्लांट सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, प्लांट ग्रोथ स्टेज, प्लांट एनवायरनमेंट और रिक्वायरमेंट्स, एक्चुअल कंडीशन, प्रेडिक्शन, यील्ड एस्टिमेशन, सारा कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है। Then robotics, इसमें कैसे रोबोट्स यूज कर सकते हैं। Then पोस्ट हार्वेस्ट प्लानिंग, मार्केट इनपुट्स लेने की बात भी वहाँ पे हो रही है कि मार्केट में आजकल 100 चीज का रेट ज्यादा चल रहा है, इसको जल्दी से इसको राइप करो और बेचो, हार्वेस्ट करो, तो उसके लिए वो लाइटिंग कंट्रोल चेंज हो रहा है। But these are the systems which opportunities for you to innovate and start new entrepreneurships, technology based। एग्री बिजनेस मैंने वहीं पे 2 स्लाइड में खत्म कर दिया था, बट बाकी सारी चीजें जो मेरी टेक्नोलॉजी बिजनेस के एंगल से हैं, तो ये सारे एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवेलेबल हैं आज हमारे पास। राइट, नेक्स्ट स्लाइड देखना क्या है। AI हमें सुनने में बहुत कुछ लगता है, AI इज नथिंग बट AI इज एक्चुअली अ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर सिस्टम व्हिच रिप्लेसेस योर साइंटिस्ट, replaces your expert। पहले क्या एक्सपर्ट सिस्टम वाला सिस्टम था, एज ए यूजर, एज ए किसान, he will go to ask साइंटिस्ट कि भाई इसको ऐसे करूं वैसे करूं। साइंटिस्ट अपनी नॉलेज यूज करके पढ़ पढ़ा के या जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे बताएगा ऐसे करोगे, वो एक्सपर्ट है। AI सिस्टम क्या है, AI के अंदर सारा कुछ एक्सपर्ट सिस्टम घुस गया उसमें, सारा एक्सपर्ट जो है वो AI बन गया। So AI will tell you ये करो ये ना करो, ऐसे है। वो आपने कैसे करना है वो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, सुनने में बहुत तोप लगती है, लेकिन if you have any thoughts, any ideas, we are there to help you innovate, start new business, start new technology, start new startup. Next slide. I think that's all. इसमें थोड़ा सा और भी मैंने लिखी है। हाँ, एक सुन लीजिए, अब मैं कुछ बोल चुका हूँ, 2-4 चीजें और बोल देता हूँ। कुछ लोगों का तो इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को तो शायद मैं लंच के बीच में आ रहा हूँ। एनीवे, सॉरी फॉर दोस्त हु आर नॉट इंटरेस्टेड, बट जबरदस्ती आते हैं, कोई बात नहीं। माय ड्यूटी इज टू डू इट, योर ड्यूटी इज टू टॉक अबाउट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 अलग चीजें हैं, दोनों के टेक्नोलॉजी में किसी ने भी आ सकता है। स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम में सबसे आसान मेथड है, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का आप एजेंसी ले लीजिए, उसकी एजेंसी लेके आप लोकल एजेंट बन जाइए, उसके
मार्केटिंग कीजिए, इंस्टॉलेशन कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, रिपेयर हो, ये जितना भी सबसे आसान एंड दैट्स इजीली अवेलेबल। बहुत से लोग रेडी बैठे हैं बोलने के लिए कि यार कोई हमें जम्मू कश्मीर में मिले, हम उसको ये काम करवाएं, ठीक है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। ऑब्वियसली दूसरे रास्ते हैं कि अपने आप से कुछ डेवलप करें। अगर आपको कोई थॉट आती है कि यार ऐसा करने से फार्मर के बहुत से पैसे बचेंगे, you can work yourself or talk to people like us who can help you develop that knowledge. कोई नई आपने सोच है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, वो आप हमारे जैसे लोगों के पास आइए, मैम जैसे लोगों के पास आइए जो आपको हेल्प करेंगे समझने में। प्लांट रिलेटेड चीजें मैडम एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स करेंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें जो इंजीनियरिंग की बातें हैं वो हम आपकी हेल्प करेंगे, और वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सॉफ्टवेयर में भी बहुत कुछ है करने के लिए। इतनी तेज भाग रही है दुनिया कि वी कैन नॉट जस्ट इमेजिन। एनीवे दैट्स ऑल, थैंक यू। लोगों ने स्टैंड की सांस लियो।